टुर्नामेंटाचो सगळ्यात कमी टोटल स्पॉन्सर केल्लो आसा शगुन कॅटरर शगुन हॉटेल जे फाटल्यान आसा त्यांनी स्पॉन्सर केल्लो आसा. Requesting the fielding team captain and even the officials, umpires to kindly take the charge. Let's start with the matches. One more match to be played after this match. Match is played for 8 overs and it takes more time. So this is a request from the organizers. मागता जे लोक हांगा साइड स्क्रीनाच्या मुखार बसल्यात प्लीज मातशें थंयच्यान सायडीन सरात. हांगा बॅट्समॅनाक खूब डिस्टर्ब जाता. एक रिक्वेस्ट आसा क्लबाचो, ह्या सुंदर अशा खेळाक आमी साथ दिवया, आमच्यान जाता तशी मदत करया आनी ह्या खेळाक आतां सुरवात करया.
Shuffling down the leg stump, wanted to cut the ball into the vacant area. No proper connection. Good shrewd bowler. Aniket Sanap judging what is going to happen as a batsman is trying different ways. So meanwhile we welcome Shri Maulana Ibrahim, proprietor of Quality Exports and one of the major sponsor for this tournament. We welcome you, sir. Meanwhile, a lovely strike guided the ball towards the fine leg. A slog sweep in act. Boundary takes the total furthermore to 5. So pretty calculated, predetermined strike. Again plays safe, don't want to take any risk. Whitey Shocker has been treated with respect and a dot ball to end first power play over. So after completion of one, score is 5 without any loss of wicket. So all 10 wickets are intact. Definitely captain must have planned the strategy. Play safely to the better bowlers and wait for the odd ones to hit. If you get set out in the middle, then there are plenty of options later. Once you see the ball like a football, you can hit the ball wherever you want. That must be the strategy of the batting team. Meanwhile, bowlers are not going to give so easy to really go after them. First was a very, very decent over from Aniket Sanap. Has given just 5 runs in that. Not able to take any wicket, but nonetheless have restricted the run flow. And now this is the second power play over. Bowled by Bunty Patel with a long run up, mixing up his deliveries. And Faldin Kazi is on the striking and he has been a prolific player in the recent past. Have won many man of the series, man of the match, best batsman awards. Full up pitch, no ball. It's a goal and what a hit. Straight over the bowler's head. Bunty Patel watches the ball going past the boundary rope. Total 5 runs added to the total 10 on the board. And a no ball that will give Faldin more liberty to really attack the bowler. So let's see what is going to happen as this match is about to progress. Still a legal delivery to be bowled in the second power play over. 10 runs on the board. Faldin Kazi looking very confident now. Could not do much in the qualifier 1, but now his bat is doing the talking. Again, cuts the ball away from the fielder. It is racing away. Fielder from the deep. Long off, gathers the ball. Meanwhile, couple of runs. Wonderful, wonderful technique. Wanted to hit the ball into the gap, not getting the proper power behind that shot. And with this couple of runs, score moves to 12. So all eyes of the dugout of Al Zargham Royal Challengers will be on this batter. Meanwhile, wanted to slog sweep. No connection, ball travels safely to the keeper. No signal from the umpire. This goes as a dot delivery. A pretty healthy contest happening out between Faldin Kazi and Bunty Patel. Two big names in this tennis ball cricket world. Change in pace, equally well played. Flicks the ball, guides it towards the cow corner region. Fielder from the circle gathers the ball. Meanwhile, chance for a single. Knows that a boundary has come, now playing sensible. Concentrating on singles and doubles. Waiting for the opportunist moment to hit the ball again. With that, team total moves to 13. Second over in progress, 13 on the board. Bunty Patel gradually on to his run-up mark.
Another good deceiving delivery, ball coming towards the batsman after hitting the deck. Karan More wanted to cut the ball, thought this is going to be a leg cutter, but disguised well by Bunty Patel, delivers unexpected delivery. And dot ball to be seen in this over as well. Score is held at 13. At the moment, the run rate is at just 6.5 runs per over. Fuller pace delivery, leg cutter, ball going away from the batsman, safely into the hands of the wicketkeeper, Munna Sheikh. The brilliant brain behind the stumps, guiding his bowlers as how to carry on in the bowling department and how to get those much needed dot deliveries. Good combination, good setup, and good support for each other. Dance of a catch, oh my dear fielder was waiting at his spot. This is where basics of cricket are required. You need to take this start, my dear. That's the basic of the fielding. Take start, be quick, and take your chances. Meanwhile, a dot ball, a single to end the over. Virat Tendulkar is a very sharp brain, doing all the stats and immediately corrects me that it was a single. Sometime we do test our own people as how alert they are, and even the teams and even the audience. So after completion of 2-14 without any loss of wicket. DJ. Soon as he is finding the better track, he has lot many tracks, but the track should be as per the situation, and our DJ is very shrewd in that. Meanwhile, we move forward towards the third over, going to be bowled by Aniket Sanup. Again a good delivery, it continues from Aniket Sanup onto the body of Faldin Karan More. Single in form of a leg by, and that brings Faldin Kazi at the strikers end. We have seen prolific batting of Faldin Kazi in the initial stage in the league format. But so far in this much important matches, Faldin Khan is yet to make that prolific performance. Maybe taking his own chances. Here we go. Low full toss, wanted to hit the ball towards the mid-wicket region, not getting the proper connection. Even Aniket Sanup takes off the pace on this delivery. So Faldin has to wait for an hour to strike that ball. And with that single, again the team total moves to 16. Meanwhile, a convincing strike. There's a chance of a catch. Rupesh Gavkar takes it. Takes a beautiful catch, and of a proper track, and as the fall of the wicket, he has played the beautiful lyric
that depicts the situation out in the middle. Tapka re tapka, that is fall of the wicket. Wonderful track and beautiful track as per the situation played by DJ Deepak. So let's see what is going to happen out in the middle. Aniket Sanap able to take a wicket. Karan More back to the pavilion by scoring individual 5 runs. Team total is at 15. As the catch was taken, as per the new rules, incoming batsman will be at the strike end. Navdeep Gaonkar has been promoted. Let's see what he can do. Another away going delivery has been pitched, a wide Yorker. So consecutive dot balls can be seen after a single, a wicket and a dot. Again plays watchfully, drives the ball straight back to the bowler. Look at the quickness of Aniket Sana. Fields the ball onto his follow through, which is not that easy. A big guy bends at the right time, fields the ball. Another dot delivery. Final delivery of this third over and the quota of Aniket Sanap. Is it going to be the over spoiler? Meanwhile, oh my dear, the big fish has been caught. Navdeep अपनी बारी है. Let's see, is it going to be which team that is going to play the finals, as both the teams are looking very, very confident. The man in pink has won the eliminator one, so their confidence will be much, much higher compared to the team that is batting at the moment, as they have lost the qualifier one and now in a hunt to somehow win this match and take the revenge. Is it going to possible? That we are going to come to know after this match. Meanwhile, fourth over, let's see who is going to be the in charge to bowl the fourth over. 3 overs, just 16 runs on the board and 2 wickets back to the pavilion, and both the wickets are taken by Aniket Sanap in his second over. And what a over it is. The third over, that is the second over of Aniket Sanap's quota, has given only 2 runs, but that 1 run will be going to the extras as it was leg by. Just a run from Aniket and 2 wickets. Kirtesh Kinarkar has been introduced by the fielding captain. What an over that we have seen that Kirtesh has bowled in the previous match, that is the eliminator. Second last over has given only 2 runs in that, and that has changed the course of that match. So let's see what he can do in this match, as Faldin is at the striker's end. Shifts his balance on the back foot. Cut shot is on there. The fielder won't be able to stop the ball from crossing the fence. What a lovely cut shot. Playing as per the situation. This is a sign of a terrific batsman. With that boundary, now finally scoreboard moves further to 20.
So Kirtesh has been welcomed with a boundary. Even the fielder was plotted to stop that boundary, but the power that have been generated by Faldin on that cut shot makes the ball to travel quickly away from that fielder. So here's the next delivery of the fourth over. Kirtesh to deliver from stadium end. Switch it, better connection away from the fielder, this time towards the left hand side. And it travels the distance quite comfortably as well. Sixer, what a player. Faldin taking his time. A wonderful example that we have seen a boundary and a switch it for a six. Another strike along the carpet, but straight to fielder at the covers. So no chance of any run. And with this, team total is at 26. So far, 10 runs from this over. Faldin at the striker's end. All eyes on Faldin. Another good delivery. Hint of helicopter in act. Guides the ball towards the cow corner region and immediately calls for the second. Wonderful batting display by Faldin. A boundary and a sixer has come. Now playing sensible. Knows that he has got the score that he wanted. With that couple of runs, score moves to 28. So Faldin taking his time before he takes the guard at the striker's end. Maybe want everything to be perfect. Short pitch delivery, slight left side, the off stump, stretch of arms by the umpire. So wide and extra to be added to the total. With that extra, team total moves to 29. So this is quite expensive over if we compare the other three. So runs are flowing now. Fuller pitch delivery, ball has been hit in the wicket zone. Fielder running after, not to stop. The ball inside the boundary rope. And the ball will be brought from outside the boundary rope. Boundary, the run flow continues. With that boundary, team total moves to 33. And we have seen the effect of 33 in this tournament as well. Most occasion, it was a fall of the wicket. Let's see what is going to happen at this juncture. 33 on the board, fourth over in progress. Oh my dear, still the score is at 33 as it goes as a dot delivery. So this concludes over number 4 after completion of 4. Score is 33 for the loss of 2 wickets. And now it's time for me to take a little break and give rest for my throat, as I would like to invite Ashok J. Naik with your sweet voice in the national language.
33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओर से ओपनर बैटर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे, 3 चौके 1 छक्का अब तक लगाते हुए फरदीन काजी बल्लेबाजी पर, और उनका साथ देने के लिए श्रेयस कदम मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, हर्षद मातोंडकर आते हुए स्क्रीन पर खुद का पहला टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए गेंदबाजी करने के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत इस बार ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, कट होकर थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ हर्षद मातोंडकर गेंदबाजी को शुरुआत करते हुए। इस बार फिर से इस बार थोड़ी फुलर लेन की गेंद, सफल हुए थे ज्यादा, बहुत जल्दी पिक किया था गेंदबाज हर्षद मातोंडकर ने। एक फुलर लेन की गेंद और गेंद फिर से एकदम जो कि निकलते हुए विकेट कीपर के हाथों में। जोरदार बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर मैच का चलता हुआ। स्लोवर 1 ढीले हाथों से खेला, गली पर फील्डर गेंद को थ्रो किया, शायद बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था मैदान पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन बहुत ही अच्छा तालमेल, लॉन सेकंड से तेजी के साथ निकले थे फरदीन काजी। एक सिंगल को बना दिया स्कोर के खाते में और एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 34 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। करण मोरे सस्ते में बिल्कुल 5 पर। नवदीप गांवकर जिन्होंने खाता नहीं खोला, पहला विकेट 16 पर, दूसरा विकेट 16 पर, लेकिन वहीं से लेकर छोटी सी साझेदारी मैदान पर बनती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। 5वां ओवर, पहला मैच बड़े टोटल का रहा, दूसरा मैच लगभग 99 का। और इस बार वेरिएशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्लोवर 1 इस बार थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइट दिया था हर्षद मातोंडकर ने, अब थोड़ा जल्दी खेल बैठे इस बार बल्लेबाज, और एक डॉट गेंद। बहुत ही अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ हर्षद मातोंडकर का। टीम का 5वां ओवर, बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। और इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा, अपने फॉलो थ्रू में निकले, गेंद के नीचे आते कैच को पकड़ते हुए और एक बड़ी कीमती सफलता दिलाते हुए अपने टीम को हर्षद मातोंडकर। तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। मैदान पर उस साझेदारी को तोड़ा हर्षद मातोंडकर ने, अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपेटा। फरदीन काजी वापस 25 रन के एक बहुत ही शानदार इनिंग, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और मैदान पर आ चुके जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, वो खिलाड़ी मैदान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रोहन सालगांवकर आ चुके हैं मैदान पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। डायनामिक रॉयल्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, ये 2 टीम आमने सामने। फाइनल में कौन प्रवेश करेगा बस थोड़ा समय जरूर बाकी है, लेकिन उससे पहले पिछला मैच बहुत ही शानदार कमाल की बल्लेबाजी बंटी पटेल की, और इस मैच में हर्षद मातोंडकर अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग फील्डर को तैनात। फिर से स्लोवर 1 खेला, इस बार गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर फील्डिंग में, लेकिन अपने आप को संभाला, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, जब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 35 रन। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में बिल्कुल रनों पर रोक लगा दी, एक कीमती विकेट चटकाया, फरदीन काजी को वापस किया और 5 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। 7 रन के साथ रन बनाते हुए मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
शानदार सफर रहा साउथ गोवा प्रीमियर लीग, एक यादगार टूर्नामेंट। क्या पिछला मैच रहा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही। शुरुआत बढ़िया की, मुन्ना शेख ने 41 रन बनाए, बंटी पटेल ने बनाए 40 रन। लेकिन उसी के साथ मैं दो नाम जरूर लूंगा जिन्होंने गेंदबाजी में आखिर में स्लॉग ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। कृतेश किनलेकर और अक्षय जोगड़े, ये दो नाम तो लेने पड़ेंगे क्योंकि आखिरी जो 12 गेंदे को खेल हुआ उस 12 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा। एक 10-15 रन कहीं ना कहीं पीछे हो गई ये टीम, तो ये दो गेंदबाजों को भी दाद देनी पड़ेगी। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन सामने से। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल मिली, लेग कटर गेंद बाहरी किनारा लेते हुए गली पर निकले। थोड़ा सा ओवरथ्रो जरूर रहा था, बैकअप हुआ मिड ऑन पर, और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 36 रन टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर, 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। खेल चलता हुआ मैच का छठे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी। लेकिन अब तक की अगर चर्चा की जाए, बिल्कुल सही लाइन प्लेइंग पर गेंदबाजी हो रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है मैदान पर। विकेट कीपर क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो हेलमेट की मांग हो चुकी है और हेलमेट बिल्कुल जो कि मैदान पर विकेट कीपर के लिए। बंटी पटेल सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था, उन्होंने भी बिल्कुल रोक लगा दी। पावर प्ले में पहले ओवर में कमाल की थी अनिकेत सन, अपने 4 रन दिए। दूसरा उनका ओवर 2 विकेट चटकाए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। थोड़े से महंगे जरूर जो कि जरूर साबित हुए कृतेश किनलेकर, लेकिन उसके बाद फिर से कमबैक मैच में। बिल्कुल थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे थे, अंपायर ने रोका था बंटी पटेल को, और वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। और स्लॉग स्विप का शॉट, लाजवाब टाइमिंग इस बार, एक बैठक शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली और मिड विकेट पर एक बहुत ही जबरदस्त शॉट, 6 रन के लिए। इस बार छोड़ा जाने दिया, बहुत ही अच्छी जो कि विकेट कीपर के पीछे फ्लाइंग स्लिप पर गेंद को रोका। वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 43 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। खेल छठे ओवर का, बंटी पटेल सामने से स्टेडियम के ओर से गेंदबाजी पर अपने बॉलिंग मार्ग पर, अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कट करना चाहते थे श्रेयस कदम, लेकिन गेंद के लाइन से बल्ले से गेंद दूर थी। थोड़ी सी लेग कटर, फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपसाइड पर एक कवर पॉइंट पर, एक डीप कवर पॉइंट पर है फील्डर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेयर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। ये फील्डिंग की जमावट मैदान पर। और इस बार खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद मिली, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट और एक बेहतरीन छक्का ऑन साइड पर। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा अब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है यह स्कोर। इस ओवर में बंटी पटेल की गेंदबाजी पर 2 बड़े शॉट लगे ऑन साइड पर, जो शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा कम लग रहा था स्कोर, अब आगे बढ़ रही है मैदान में बल्लेबाजी में अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। 49 टोटल, 49 रन, 3 विकेट पर, 2 छक्के, 13 पर खुद के व्यक्तिगत। श्रेयस कदम
रोहन सलगावकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रनों पर बंटी पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ये फिर से थोड़ी सी ऑफ पर छोड़कर पीछा किया था, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत दूर थी बल्ले से, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शानदार शुरुआत फरदीन काजी ने की थी जो 25 रन बनाए, लेकिन उसके बाद साथ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद ये बल्लेबाज खास करके इनके ऊपर दारोमदार है मैच में, मैदान पर श्रेयस कदम। और इस बार गेंद खड़ी हो गई, देखना होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, हाथों में गेंद को कैच को लपेटा और चौथा धक्का लगता हुआ टीम को। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, खेला था इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर। रूपेश गांवकर बहुत ही शानदार फील्डिंग मैदान पर, तेजी के साथ आते गेंद को कैच करते और बड़ा धक्का लगा, बड़ा विकेट वापस निकला। तो थर्ड अंपायर की ओर कॉल आ चुका है। थैंक यू। तो थर्ड अंपायर का इशारा फेयर डिलीवरी, तो जाना पड़ेगा बिल्कुल वापस। बिल्कुल हम यहां पर स्वागत कर रहे। आइए सर। सर एडमंड फर्नांडिस जिनका यहां पर आगमन होता हुआ, सर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपसे रिक्वेस्ट है, आइए सर मंच पर तशरीफ रखिए। सम्मानीय अतिथि हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत, जो उपस्थित दर्शक है मैदान पर पूरे चारों ओर, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और विकेट नंबर चौथा वापस, 2 छक्के और एक सिंगल के साथ श्रेयस कदम 13 पर सफलता मिलती हुई आखिरकार। थोड़े से जो महंगे साबित हो रहे थे, 2 छक्के लगे थे लेकिन उसके बाद सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, और टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खुद का दूसरा कमेंट्री बॉक्स की ओर से टीम की ओर से 7वां ओवर जारी रखते हुए हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और मैदान पर न्यू बैटर अमेय दामशेखर। रोहन सालगावकर 2 पर अभी अभी आउट होकर वापस 13 पर श्रेयस कदम। और स्लो ओवर 1 पुलर लेन की गेंद इस बार 1 रन के लिए निकले। देखे होगा नॉन स्ट्राइकर इन पर पहला निशाना लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित, और इस सिंगल के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए 50 रन 4 विकेट पर खेल जारी 7वें ओवर का। हर्षद मातोंडकर लेग बाइट के साथ 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। रोहन सालगावकर का साथ देते हुए अमेय दामशेखर न्यू बैटर मैदान पर, और हर्षद अपने बॉलिंग मार्ग पर। और फिर से स्लो और 1 टॉप एज लगा, शॉट फाइन लेग पर फील्डर बिल्कुल हाथों में गेंद, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई हर्षद मातोंडकर को 5वां विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी गेंद, एक मिस टाइम शॉट और एक आसान सा मौका बना शॉट फाइन लेग पर। सफलता मिलती हुई जो पहले ओवर में अपने पहले स्पेल में 1 विकेट चटकाया था, अब दूसरे स्पेल में जो 7वां ओवर मैच का, और आते आते जो कि दूसरी गेंद पर एक सफलता मिली। स्कोर 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक की अगर सफल बल्लेबाजी की तो फरदीन काजी ने बनाए 25 रन, 13 रन बनाए थे श्रेयस कदम ने,
और देखना होगा न्यू बैटर मैदान पर आते हुए अनुष केरकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा स्लॉग ओवर में कहीं ना कहीं, अगर पहला मैच आप सभी ने देखा 125 का टोटल, दूसरा मुकाबला रहा था वो 99 रनों का टोटल, 100 का टारगेट था। क्या शानदार मैच रहा, आखिरी ओवर पर चला गया मुकाबला। और देखना होगा ये तीसरा मैच है, कहीं ना कहीं शायद एक 75 के 80 के आसपास पहुंचते हैं या नहीं। अगर इससे कम स्कोर में सीमित किया, लेकिन कम टोटल के मैच अक्सर बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े टोटल वो भी मुकाबले बहुत ही शानदार होते हैं। फिलहाल अनुष केरकर सामना करेंगे हर्षद मातोंडकर के गेंदबाजों का। दूसरी सफलता मिली हर्षद मातोंडकर को अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंडर बैटर सामने और उनके लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। फील्डिंग में परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए, लगभग हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर है तैनात लगभग बाउंड्री लाइन पर। तेज आते हैं, स्लो ओवर 1 करते हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस विकेट पर। एक सिंगल बन गया आते आते, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं था। सामने से लिमिट ऑफ पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 51। विराट तेंदुलकर हमारे साथ बिल्कुल शानदार स्कोरिंग की जानकारी बीच में देते हैं। और राइट हैंडर बैटर के लिए ओवर द विकेट हर्षद मातोंडकर। 7वां ओवर मैच का चलता हुआ, इस बार थोड़ा सा अपेश खेला, हवा में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ पर खेलना चाहते थे, डीप कवर पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन जब तक गेंद को थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए, और इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 53, 53 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। डायनामिक रॉयल्स टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला। बहुत अच्छी गेंद, नकल गेंद, आखिर में बिल्कुल जो कि उंगलियों की करामत की थी हर्षद मातोंडकर ने। लेग कटर थी एक, जो कि लगभग ब्लॉक होल में कट होकर बाहर की तरफ निकली। खड़े खड़े बिल्कुल कोई फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज का, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्लेबाज को बेट करते हुए एक बार फिर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार स्पेल, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद निकली गली की तरफ, सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। सिर्फ एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा, और एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में एक बड़ी सफलता हासिल की, रनों पर रोक लगा दी। 2 ओवर का उनका कोठा निश्चित रूप से समाप्त हुआ, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 7 रन, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन और 2 विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्पेल इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। तो देखते देखते खेल 7 ओवर का समाप्त हुआ, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 54, 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर, आखिरी ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। ये ओवर अगर एक टीम की और मैं बात करूंगा जो डायनामिक रॉयल्स की, आपको ये ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर सामने बात करूंगा अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के लिए, कम से कम 2 या 3 तो बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे इस मैच में। एक 65-70 का टारगेट फाइटिंग टोटल बन जाएगा मैदान में, लेकिन देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रनों पर पहुंचती है अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। अक्षय जोगरे अंतिम ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओवर पिच गेंद, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर पर फील्डर, लेकिन इस बार गलती कर बैठे मिस फील्डिंग करते हुए, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ सर एडमंड फर्नांडिस, जिनका आगमन होता। सर आपका बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में, जो पर्व दूसरा। 3-3 ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम में शामिल, और इसी बीच 4 बहुमूल्य रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और वहीं पर चौका, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 58 लॉस ऑफ 5 विकेट। तेज गेंद, इस बार ऑफ स्ट्राइक पर सफल हुए थे, खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट,
लेकिन उतना ज्यादा मौका नहीं दिया, एक सिंगल बन गया फिर से स्कोर के खाते में। अपने फॉलो थ्रो में आते गेंद को फील्ड करते, पहला सोचा था थोड़ा सा निशाना लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा लॉन्ग बाउंड्री पर बैकअप बहुत दूर है, दूसरा रन बनेगा अगर गेंद नहीं लगे स्टंपों पे तो, और वही सोचकर जो कि एक सिंगल 59 59 टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर सामने, अनुष केरकर अक्षय जोगड़े एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, खास करके फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, और लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राउंड विकेट आते हुए अपने बॉलिंग बार पर दूर वाले छोर से फातोडा स्टेडियम की ओर से। धीमी फेंकी गेंद प्लेड ऑन हुई, इस बार बल्ले का भीतरी किनारा लगा, बोल्ड हुए, छठे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। और मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ सर शाहिद शेख जिनका आगमन होता हुआ। शाहिद सर आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में, आपका बहुत बहुत स्वागत। सीजन दूसरा 2023 और पूरे भारत भर में बिल्कुल जो कि एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होते हुए एक शानदार क्रिकेट, सुरभि लाइट्स एलईडी स्क्रीन पर भी बिल्कुल इस क्रिकेट का मजा, TennisCricket.in से भी बहुत से सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का, आज आखिरी दिन रात का सफर, आने वाला अंतिम मेगा फाइनल का मुकाबला अभी भी बाकी, और देखना होगा न्यू बैटर और एक आ चुके हैं मैदान पर। आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Did well with 25, and then it was just mobile number 05001000, and a pretty good knock in the end. 1-6 from Nihal Bind, but not a big total being posted here. But you never know, under lights anything can happen. 69 is the target. So if all Zargham Royal Challengers can take early wickets, this match can be interesting. We have seen low totals are always difficult to chase. Important man here for Al Zargham is going to be two players, special two players, Munna Sheikh and Bunty Patel. When you see a match like that, which was won by Dynamic Royals, what happens is the team spirit in that camp suddenly lights up, and everyone wakes up. Yes, they feel that this is their tournament to win here, because we have won a match which was almost close to impossible to win that, and they have made a strong comeback. And once that happens, the momentum certainly was with them, and they have done a very good job in bowling department. Now up to the batsmen to shine and chase this down, which is not a great total, but certainly if the bowlers bowl well in the right areas and the fielders reciprocate the same feeling, you can certainly defend this one. Thank you, Ashok Naik sir. It was always great to share the commentary box with you in many of the tournaments. We have learned a lot from your commentary. Let's see what is the field set here for Munna and Rupesh. Rupesh, the highest bidded player for 21,000 in the auction. But here is an opportunity. So far, has not done that well compared to the standards that Rupesh has in himself. And as a Goan commentator, I feel that some of the Goan players should shine brightly at this stage. The big stage provided by GCC to the Goan players to showcase their talent. Rupesh has also played outside Goa in tournaments in Karnataka, Maharashtra, and done very good.
So here is Rupesh and Munna. An opening pair right throughout from the first game till this point of time. But the opening pair has not given them a great start. But Munna Sheikh is the man who has been the cadastral man and the catalyst here, who does the role very well and waits for his time. And that's how when you see a player like Munna Sheikh, everyone needs to learn from him. And especially when you are in the dressing room, just talk to him. And there are lots of prizes. You can see a board at a long off region. There is a C Easy, who is one of the co-sponsors, Mushtaq Bab Ahmed. If you hit that logo, only the logo, you will get a cash prize of 5,000 rupees. Big prizes announced. Already we have seen Ankur Singh taking 7,000. 2,000 rupees cash prize was won by him by scoring a 50, and then next 5,000 it was a cash prize if Fardin Kazi was being taken out in the first over. He takes him out in the very first ball and takes a cash prize of 5,000 from the owner Ahmed Khan. So lots of cash prizes, and here is the first ball of this run chase of 69 runs. Very nicely played, wonderful shot played off the front foot, the drive in the covers. So single to start the proceeding. This is the way that he plays. He plays this game in a calm and composed manner, not taking any risk, treasures his wicket, gives it a tag, gives it a value. That's what every batsman should do. KKG owner Ahmed Khan is having a walk and he'll be seeing this match closely. This is in the air and up and over the mid-off fielder for 4 runs. This was a full toss ball bowled by Satish Yadav, and Rupesh takes advantage of this power play overs, hitting it above the head of that fielder. Certainly with the total that is on the board, they cannot afford to bowl loose balls, especially short balls, full toss ball. And power play overs are enough advantage as most of the fielders inside. These 2 overs certainly will set the pace. If these 2 overs go right here for the batting side, they will take this momentum up and forward. Whereas the bowling side, if they can take 2 wickets, this game will be on. Once again, this time played it in the point region, straight to the fielder Ramesh Damshekar, patrolling that region. Well, for any of the cricket lovers, just like marriage, when the bride is beautiful, here also on this ground, when it's totally lighted, all the towers, this ground is looking beautiful like a bride. Oh, lovely shot, full toss, ample of room, ample of space, just glided down in the gap between the point and short covers fielder. No risk whatsoever in that shot. 2 boundaries for Rupesh in this over so far. Still not get the particular line that he would like. They should concentrate on the right channels. If they are bowling the full toss with so much open spaces, it's going to be too easy for the batsmen. Oh, wonderfully bowled. Good comeback by the bowler, right in the block hole. So need to fight. All Zargham Royal Challengers need to fight. It's just that low total on the board should not play in the minds. Just take the chances, even the half chances. They have to take the wickets. That's the key here. This is played nicely. He finds the gap very well and times the ball superbly. There were 2 men. One was in the mid-on region and one was at deep square leg. No chance for both these players. 3 boundaries taking the score to 13 runs after completion of first over.
The required run rate at the start of the innings was around 9.5. So they've got much more than that in the first over, 13 runs. A very good start here for Dynamic Royals. And if you see the batting of Rupesh in this tournament, he was playing some cross-batted shots, and that's where he found the fielders on the edge of the boundary ropes and gave away his wicket. This time he's playing calm and composed nature, and he knows even if I play a down the ground shot without taking any risk, I am going to get value for my shots. So he's learning from his mistake. In comes Rohan Salgaonkar, the best bowler for this team so far in this tournament. Wide signal here by umpire, way to outside off stump. The keeper and bowler feels that it was inside, but umpire is rightly judged it. Where are the fielders? One at deep square leg region, one is in covers. Two men on the edge of the boundary ropes. Once again, good calling there from the non-striker's end. Rupesh was to run at the non-striker's end, or the danger end, you can say the striker's end. They don't want to risk a wicket at this stage. This time also a drive. There is a man in the deep which will fetch him only a single. The singles can do the job in between the boundaries, or a six for loose balls will do the job here for Dynamic Royals. Munna Sheikh is the key, and I feel in the commentary box they have to make him do something different away from his game. And if they are able to do that and they are successful, they can stay in the hunt, they can stay in the race of this qualifier too. This time very nicely bowled, just outside off stump. This is the line that he has concentrated so far. Very good bowler and performed excellently for them. The only bowler to shine brightly, and even in yesterday's bowl out, he was the only one to hit the wickets for all Zargham Royal Challengers. So I'm trying that big shot. Chance of a run out, direct hit was required, and there is a backing. So it's going to be just a single. They need to shy, yes, they need to shy. They need to take the chances. Wickets are the only keys here to open the lock. There are 10 keys to be opening this one lock of entering into the finals. Still now they have not opened a single one. Score moves on to 16 with that single. Going for the switch hit, finds the fielder. Didn't get the elevation. He just wanted to lift that ball over that fielders. The area of fielders backward of point, almost 3 and 1 in short extra cover. Lovely over so far from Rohan. Bowling in the right channel. He has lifted that well, no time, Rupesh. Chance of a run out. But Rupesh makes it well in the end. The calling of Munna Sheikh was loud and clear from the striker's end. He knew how well he has timed it. He hits it straight to the man at mid-on region and says no to Rupesh. And the dot ball will finish over number 1. This over has gone totally in favor of the bowling side, Al Zargham Royal Challengers. And once again, this bowler bowls an economical over, just that he could not pick up the wicket. After completion of 2, the score is 16 without loss.
53 runs required in 36 balls. So Ajay Kewat, captain of the side, has come on to bowl from the far end to Rupesh. Appeal from Ajay, but no appeal from behind the wickets, and especially from keeper. Keeper is the first one to know whether there is an edge or not. It's more sort of excitement. Nothing more. Starts off very well here. Ajay Kewat bowled in the good length area, and the ball slightly moving away. But this bowling attack of Zargham Royal Challengers does not have that much of variations, or does not have that much of changes as far as spin or the left armers are concerned. Goes for the big one once again. Very nicely collected by keeper. 2 dot balls in a row. Rupesh once again trying to hike that over mid-wicket region. No connection. It's every dot ball will lift the spirits of Al Zargham supporters and also the players. They will feel that yes, we need to bowl a few more dot balls and bind up this batsman. This time flick on the leg side. Munna Sheikh says just a single is enough. Don't take the risk. Single is enough. And he once again tells Rupesh go back in the crease. So now what is the strategy? Two players are having a talk to the bowler. So far you have done a very good job. And don't bowl in the strong zone, strong areas. Munna Sheikh likes to hit that in the square leg, backward of square leg region. Anything slightly short, he is ready to pouch onto that. So where is the line and length going to be from the bowlers? 4 men behind the wickets, starting from the backward of point region towards the gully, and short third man and short fine. Oh, he tries to favor that region. He tried hard, but the bowling is also pretty good. Bowling outside, not bowling in his zone. If it was slightly straighter, he could have got that swing and the timing to hit that in the square leg region. We have seen many sixes hit by Munna in that square region. This time he does not connect. Cricket is all about application of mind and converting that mind into a fruitful result, bowling in the accurate zones. This time he swings it well, finds a gap, looks like no. Good piece of fielding on the boundary rope, just restricts the batsman to a single. Applauded by everyone on the ground. So this crowd here at Fathoda Stadium very well knows that it's not only about sixes and the wickets that has been taken by the bowlers, but good fielding is also appreciated. The cricket lovers likes to see good game of cricket, intense game. The fervor of intensity and passion is what drives cricketers to come on this ground, thronging, watching these cricketers, star cricketers from outstation and also from Goa playing at this venue. This is in the air. This should be 6 runs. This is high, and this has gone many rows back. First big blow in this run chase, right in the slot, and directly hit in that cow corner region, and a mammoth strike from the bat of Rupesh.
needs to come here at this point of time without a wicket being lost. There is no pressure whatsoever. Rukesh has hit 3 boundaries and 1 6, whereas Munna Sheikh playing on just 3 in 6 balls. The partnership at the moment is 24 in 18 balls. That is 3 overs completed. The crowd also looking very closely. They have kept their eye on this match. They just want one moment. That's lovely bowling. Lovely bowling. Chance over on a direct hit required, and it was attempted well there by the fielder, but good backing. Just a single. Munna Sheikh so far taking no risk whatsoever. Just like the same innings that he plays every time. He knows that the asking run rate is not much, and he can cover up with just 1 over. He knows there are weaknesses, there are loose holes. He's the thread here. He's the thread where all the other players are binded into. This thread needs to be broken. This thread of Dynamic Royals needs to be broken here by Al Zargham Royal Challengers, the Munna Sheikh. Otherwise, they are going to do it playing simply just like this. A shot played down the ground for a single. No risk, nothing whatsoever. Taking the score to 26. So Rohan Salgaonkar has been given the job once again to continue and bowl in the right channels, pile up the pressure, only piling up the pressure, and just hoping, they are just hoping here that some miracles happen. Miracle in the form of a wicket of Munna Sheikh, maybe playing a risky shot and giving his wicket. So far not even a single boundary and a 6 on his name in the 4th over. Rohan Salgaonkar continues. Is it wide? Yes, it is. Definitely a wide ball. So 1 to the extra, taking the score to 27. Viraj Tendulkar is the scorer, hailing from Sandwadem, has done a fabulous job. Clean handwriting, clean job right from the first day. Gaurav Sawant from Tennis Cricket is also assisting every time with the updates and the achievements of different players. On the cross-batted shot, but finds the fielder. Straight in the hands, 1 bounce. Just a single once again. Checking the ball here. Maybe he feels that he has timed it well, but still not going the way that he would have liked to. Both the openers are on the crease. That's a good sign. That's a positive sign here for Dynamic Royals. Once again trying that cross-batted hoik, and once again a dot ball here from Rohan Salgaonkar. Once again the timing part is missing. Once again another single. You can see Rupesh is itching to go for that big one, but he's just itching on the bat as well. He's not middling the ball. The sweet spot is missing right now. Another single, taking the score to 29, 4th over. Last ball to be bowled. Very good from Rohan Salgaonkar, and he needs to finish well. Finish well with maybe a wicket. Wicket will be icing on the cake. This time in the air, will it be taken? Fielder takes the catch. Rohan, take a bow. Absolutely stunning bowling. I need to appreciate this man. He was magnificent right from the first match, and he's magnificent today as well. You have kept this match alive, Rohan Salgaonkar, and kept the hopes of all the supporters of Al Zargham Royal Challengers, and also your 11 players who are playing on the crease right now.
Is it going to be the twist around? Munna Sheikh, the man who has scored wonderful knocks and weighted game. This time he departs on the last ball of the fourth over. The game is still alive and the match will continue, and we'll see the run chase in the fifth over as well. Well, we always thought that sky is the limit, but as human beings, we have explored the universe as well. And with man's imagination, with your dedication and commitment, this exploration will continue. And also, I think something needs to be explored here, and some innovation, some magical thinking to be done by the bowlers. Now you have got a wicket of Munna Sheikh. Now you feel that if you get a wicket of Bunty Patel, you can come back. Rupesh is someone who you cannot bind for quite long time. Once one or two balls is certainly the one who is going to go after the bowlers, and you have to feel, you have to think positive. Yes, we are still in the race, still in the game. 29 runs on the board with 4 overs bowled, and in comes the fifth over. Satish Yadav has been given the job here to bowl from the far end. Keep piling the pressure, keep pushing them hard. Don't give any easy runs. This time the golden strike, absolutely a golden strike. What a time Rupesh is coming to the party here. Rupesh has waited and waited and waited, and finally joining the party. Learned something from Munna Sheikh, and he's doing it on the ground. That I told, it is Ajay Kewat, the captain of the side, has come on to bowl and has been welcomed with a magnificent swing of the bat on the Kaukana region for a 6, taking the score to 35. This time, good comeback, very good comeback. Well, as a bowler, there will be some human errors, there will be some errors, and batsmen will take the advantage, but the guts of yours and the zest within has to come in front, and he says, yes, I have been hit for a 6. Now is the time I have to show my courage and make a comeback. This time driven nicely, fielded very well, and throws it to the keeper. Very good throw, stayed in the hands, so just a single. Rupesh was putting the pressure on the fielder, but the fielding has been good today, at least in this match of Zargham Royal Challengers. Enjoying this match from the commentary box, and certainly I would like to thank GCC Fatoda for giving me also the opportunity to showcase my talent in the commentary box, and enjoying the time for last 3 days, and it's a beautiful Sunday and a beautiful match. So doing something different, which we are not used to here, Bunty Patel. It was altogether a different innings when the cards were against them. All the cards were against Dynamic Royals to win that match, and they have toppled the cards, they have toppled the norms, and won that match. Now he knows he doesn't have to do anything silly here. Just takes a single, gives a strike to Rupesh. This time he strikes. Rupesh is striking it beautifully. The highest bidded player in the auctions is coming to the rescue of Dynamic Royals.
What a beautiful strike. Clean swing of the bat. He's always been a clean striker. And the swing of the bat takes the ball over the boundary row for another 6 for him. Look at that shot. I thought it is going straight into the hands of that covers region fielder. He was left with no chance. This is sheer timing, sheer grace, sheer elegance from the classy batsman of Goa, Rupesh Gawkar. And I will leave the commentary box at this stage when Dynamic Royals are doing a fantastic job timing the ball. Rupesh is single-handedly taking them home closer towards the victory laps. Let's see whether that 100-meter hurdle will be crossed here by Rupesh with a partnership of Bunty Patel, or he needs services of other batsmen to cross that line. And the barricade has been laid here for both the teams after completion of 5. The score is 47. आता है इस दुनिया में, और यहाँ पर कोई चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाजी करने वाली टीम रॉयल्स टीम को। देखना है सामने वाली टीम के, तो रुपेश ने छक्के छुड़ा दिए हैं। क्या 2 छक्के 1 चौका 38 रन बनाकर खेल रहा है। एक खिलाड़ी सेना बराबर मैदान के भीतर, और साथ साथ उनका साथ निभा रहा है पिछले मैच का हीरो बंटी पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात। यहां से अगर विकेट चटकाए नहीं तो काफी देर हो जाएगी मैदान में आते आते। इस वक्त ये विकेट की मांग करती है उनकी टीम, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए सेट बल्लेबाज रुपेश अभी भी मैदान में है, उनको आखिर तक लड़ना पड़ेगा। बात अगर रन और गेंदों की जाए तो 18 गेंदें और 22 रनों की है आवश्यकता। मैच बनेगा या नहीं ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि समय से परे बलवान इस दुनिया में कोई है नहीं, और समय के पिटारे में क्या छिपा है इंसान को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता ना तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता। देखना है सपना सच होने के लिए मैदान के भीतर लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, फिर दौड़ना पड़ता है। देना है यहां पर किसके हाथ में बल्ला है, और सामने गेंदबाजी के लिए अनुषा केरकर। इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहने। और इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया। यहां पर रुपेश ने बंटी पटेल को 1 रन खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 48 रन पर। अनुष केरकर की बात की जाए, वो सांगेम प्रीमियर लीग का मुकाबला कोई नहीं भूल पाएगा। बॉल आउट का वो मुकाबला था और निर्णायक गेंद थी अनुष केरकर के हाथ में, और इस खिलाड़ी ने बॉल आउट में सीधा विकेटों के ऊपर 2 बार दे मारा और अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए थे। और वही अनुष केरकर मैदान पर क्या अंकुश लगा पाएंगे गेंदों के ऊपर, क्या अंकुश लगा पाएंगे रुपेश की बल्लेबाजी के ऊपर, ये आने वाला समय तय करेगा। समय की बात है, कल जो हुआ उसे भूल जाइए। आने वाले समय में क्या करेगा, आपके हाथों में क्या लिखा है, हाथ की लकीरें क्या कहते हैं, इसके ऊपर निर्भर होना चाहिए।
इसलिए कहा जाता है नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर एक बार अनुष, ओ ये बेहतरीन गेंद, टिप्पा गिरने के बाद तो जिसे टेनिस बॉल बाउंस कहा जाता है, गेंद निकलते विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। इसी की बात की जाती है कसौट भरी गेंदबाजी, जो गेंदबाज करता है ना उसकी सराहना की जाती है मैदान में और मैदान के बाहर भी। देखना है अनुष केरकर किस तरह की गेंदबाजी करते बची हुई गेंदों पर। ओ फिर एक बार ये ऑफ स्टंप यॉर्कर, सीधी निकली गेंद, बल्ला आने से पहले गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के पास, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। दो गेंदें डॉट निकली, पहली गेंद के ऊपर निकला था सिंगल, टोटल है 48। अभी भी अगर रनों की बात की जाए तो बहुत ढेर सारे रन चाहिए, मैच बन सकता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। मैच बनाना, काम बनाना, बिगड़ना ये इंसान के हाथ में है। इंसान के लकीर के ऊपर सिर्फ नसीब की छाया हो जाती है। और इस बार खेल दिया हवा में जरूर, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करते सिर्फ मिलेगा सिंगल। अब तक की इस ओवर की बात की जाए, एक कंजूस सी गेंदबाजी, एक नपी तुली गेंदबाजी, टोटल इस सिंगल के साथ 49 पर पहुंचा हुआ। थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है, अभी भी 20 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ये छठा ओवर है प्रगति पर, 14 गेंदों का खेल बाकी, 20 रनों की आवश्यकता। पिछला मैच आपने देखा था कितने रन चाहिए थे, आखिर की 3 ओवर में कितने रन बने, 3 गेंदें बाकी बची। लेकिन ये लो स्कोरिंग के मुकाबले हमेशा हमने टाइड होते हुए देखे हैं, रोमांचक होते हुए देखे हैं। इसलिए तो 5 साल से बच्चे से लेके 60 साल तक बूढ़े तक इस क्रिकेट के ऊपर फिदा होते हुए दर्शक हमने देखे हैं। इस बार थोड़े से भटके, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड रेखा से बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए डायनामिक रॉयल्स। अनुष केरकर अब तक टिक टक गेंदबाजी, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। ये वाइड जो थी उसके ऊपर 50 का आंकड़ा पार कर लिया है, टारगेट है 69 रनों का। वैसा तो आसान लगता है मैदान पर। ओ ये खुद कर निकालनी चाहिए, मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, बल्ले को लगे, जिस विकेट का तलाश थी वो विकेट आखिरकार अनुष केरकर निकालते हुए, इसी को कहा जाता है चंदन। अनुष केरकर ने एक प्राइस विकेट निकाले, बंटी पटेल को चलता कर दिया, 2 रन बनाकर वापस खेमे की ओर मायूस चेहरा लेकर निकलते हुए पिछले मैच के हीरो इस मैच में मात्र खासा कमाल दिखा नहीं पाए। बहुत दूर से ही सलाम है। मैदान पर जब तक आपका बल्ला चलता है, लास्ट बॉल टू गो। तो गेंद की मांग की जा रही है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो जो आपकी फरमाइश है वो सभी फरमाइश आज की रात में पूरी कर दी जाएगी। कल किसी फरमाइश को सुना भी नहीं जाएगा, क्योंकि आज का रात, आज की शाम आप सभी के नाम। क्रिकेट का माहौल इस मैदान के ऊपर इस तरह से छाया हुआ, जहां जहां नजर फेरी जाए वहां वहां सिर्फ दर्शक ही दर्शक है। इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा क्राउड है।
अभी भी 13 गेंदों का खेल बाकी, 19 रनों की आवश्यकता। मैच बीच मझदार में फंसा है। 50-50 का जो कि मौका है दोनों टीमों के लिए। किसकी झोली भरेगी, किसकी झोली खाली हो जाएगी और किसके लिए 365 दिनों का इंतजार होगा, वो दुखद इंतजार होगा। ये कांटा 365 दिन चुभता रहेगा। कहां हमने गलती करी है, कहां हमें मैच हमारे मुट्ठी में था, वो फिसल गया रेत की तरफ। ये देखने वाली बात तो है, ये 13 गेंदे क्या रंग लाती है। अनुज केरकर ने काम तो कर दिया है और कप्तान आए खुद सैयद बद्दी मैदान के अंदर। इस तरह से मैच बीच में फंसा हुआ है कि बड़े शॉट से रन बनाए जाए, सिंगल डबल के ऊपर अहमियत दिए जाए, विकेट बचाकर रन बनाए जाए। इस सिचुएशन का ये मुकाबला, 13 गेंदे 19 रन, क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में भाकित करना हमेशा गलत माना जाता है। और इस बार उठाकर खेले, गेंद देखिए गोली के रफ्तार से हवा से बाटा करते हुए निकलती सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और 12 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। आवश्यकता थी और वो बड़ा शॉट निकला। खड़े खड़े के लिए सैयद बद्दी, गेंद हवा से बातें करती हुई सीधा कमेंट्री बॉक्स के नजदीक के सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। और वही सा मैच अब मात्र पूरी तरह से हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। डायनामिक रॉयल्स की बल्लेबाजी भारी भरकम है, 12 गेंदे 13 रन और गेंदबाजी के लिए सतीश यादव को याद भरी गेंदबाजी करनी है। सामने बल्लेबाज रूपेश। ओ इस बार खेल दिया, बल्ले के निचले हिस्से को लगी गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जब तक फील्ड करते 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया। आसान तो जरूर लगता है मुकाबला मैदान के अंदर खेलना लगातार बार बार, और इस तेज गर्मी के बाद इस शाम के वक्त थोड़े से ठंडे वातावरण में बाहर बैठकर आसान है कहना, लेकिन जब अंदर जाओगे ना तब छूटेगा पसीना, कहां से छूटेगा पता नहीं चलेगा। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 12 रनों की है आवश्यकता। और इस बार आड़े बल्ले के साथ गैप में गेंद जी नहीं, खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल। 10 गेंदों का खेल बाकी है, 11 रनों की आवश्यकता। वो एक छक्के ने काम कर दिया, वरना दबाव में आ जाता। लेकिन कप्तान इसे कहा जाता है जो सीना तान मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, और वही कर दिया सैयद बद्दी ने। और इस बार खेल दिया फिर एक बार रूपेश ने मिडान की क्षेत्र, मिडान लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर फील्ड करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 59 9 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 10 रन, मैच में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। एक आध विकेट मैच में वापसी कर सकती विपक्ष टीम, एक बड़ा शॉट मैच पूरी तरह से
आसान बनाने वाला रहेगा। सामने है कप्तान सैयद बद्दी, जिनके बल्ले से एक छक्का आते आते देखा था पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर। वही बल्लेबाज मैदान के भीतर इस वक्त अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश करता हुआ। ओ इस बार स्विंग एंड मिस, जगह से खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद कांटा बदला, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अब गेंद बची है 8 और रन चाहिए 10। 8 गेंदे 10 रन, एक आध और डॉट गेंद निकाली जाए, यही सोच होगी फील्डिंग करने वाली टीम को। तो दूसरी तरफ से एक बड़ा शॉट के साथ आसान आखिरी ओवर में बनाया जाए इस मुकाबले को, यह सोच होगी कप्तान सैयद बद्दी की। क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। ओ इस बार देखना है अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ और 22 का एक सिंगल, यानी कि कुल मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 61 पर। ये मैच में टर्निंग पॉइंट, हमेशा करवट बदलता हुआ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। दूध से नहाए हुए स्टेडियम के ऊपर रोशनी देखिए किस तरह से नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल जो आईपीएल खेला जाता है ना, वही सितारे इस जमीन के ऊपर उतरे हो। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की जर्सी भाती हुई तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जर्सी नजर आती हुई। शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायरों के साथ, शायद देखना है क्या अंपायर का फैसला हो जाता है। शायद खिलाड़ी थोड़े से परेशानी में आ रहे हैं, चोटिल हो चुके हैं, जिनके लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर अंदर आते हुए। अब बची है 8 गेंदे 8 रन। आनंद बद्री ये भी आज यहां पर दिखाई दे, बहुत 3 दिन से, लेकिन मुझे बहुत सालों के बाद दिखाई दिए। ओ इस बार खड़ी हो गई है, क्या इसमें दूरी है? दूरी है जी नहीं, सीधे हाथ में, विकेट का पतन, रूपेश आउट। डीज 40 रन बनाकर एक अच्छी मुकाम तक अपने टीम को लाकर वापस चले गए रूपेश। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी मैदान के बीच में देखने को मिली। न्यू बैटर हर्षद मातोंडकर मैदान के अंदर दाखिल होते हैं। अब बचे हैं 7 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। क्या ये मैच में और एक आने वाला ट्विस्ट है? क्या ये सिर्फ झांकी थी? पिक्चर अभी बाकी है, रोमांच अभी बाकी है। क्रिकेट है मेरे दोस्तों, कोई नहीं कह सकता, और भाकित करने वाला हमेशा क्रिकेट में गलत हुआ है, गलत साबित हुआ है। ये हमने कई बार देखा है, बार बार देखा है। ओ इस बार खेलना चाहते थे, अल्टी पल्टी ऐसा निकले, रनआउट का खतरा। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, लेकिन खुशकिस्मत रहे, वापस आए पॉपिंग क्रीज में। ओवर समाप्त हुआ यहां पर 7वां। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 8 रनों की और है आवश्यकता। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को समय और इंतजार कर रही है उनके लिए टीम जो कि क्वालिफायर 1 का मुकाबला जीतकर काफी देर से इन 4 टीमों की 3 टीमों के बीच में लड़ाई देख रही थी। अब यहां से कौन आएगी शायद देखने वाली बात होगी। मैच किसी ने सोचा नहीं था, ये 68 रनों का टारगेट 69 रनों का टारगेट था, इस तरह से मुकाबला आखिरी ओवर तक चला जाएगा। लोग शायद समझ रहे थे शायद ये मुकाबला 5वें 6ठे ओवर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं, जो इंसान सोचता है ना वो कभी होता नहीं है, क्योंकि समय से परे बलवान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 8 रनों की है आवश्यकता। मुकाबला ऐसा हो कि हारने वाले से ज्यादा जीतने वाले की नहीं, जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा हो, इस तरह से मुकाबला घटना चाहिए। और यही देखने के लिए दर्शक आते हैं मैदान पर, तालियां बजाते हैं विकेट गिरने के बाद, तालियां बजाते हैं छक्के लगने के बाद, तालियां बजाते हैं चौके लगने के बाद, और तालियां बजाते हैं 100% एफर्ट देने वाले खिलाड़ी के साथ। 6 गेंदे 8 रन और आखिरी ओवर डालने के लिए श्रेयस कदम। हेलो और इस बार लेग स्टंप के ऊपर देखिए, इसको खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, पीछा किया जा रहा है, क्या गेंद निकल जाएगी? ले जी हाँ, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शायद ऐसा लग रहा था गेंद रुक जाएगी, सिंगल आएगा। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है और 4 रनों की है आवश्यकता। इसे कहते हैं पहले से ही मंदी और उसमें आटा गिला हो जाना। इसे कहते हैं आमदनी 58 और खर्चा रुपया। 5 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। ओ ये है कप्तान, ये कप्तान चला सीधा तान, क्या लाजवाब फिनिश कर दिया है। इसे कहते हैं कप्तान है, इसे कहते हैं कप्तान जो जीत दिला के मैदान में बाहर आ जाता है सीना तान। बहुत ही बढ़िया सैयद बद्दी, लेकिन बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ। फाइनल में प्रवेश करने के लिए आपको बधाई, ढेर सारी बधाई। कुछ देर के बाद ही पता चलेगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी अपने टीम के लिए। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि लड़खड़ा रही है पारी, लेकिन एक तरफ से डटे रहे मैदान के बीच में एक खिलाड़ी सेना बराबर 1 मैन आर्मी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, 1 एंड ओनली 40 रन्स विद मैच, रुपेश गावकर, मैन ऑफ द मैच, सेकंड क्वालिफाइड मैच। प्लीज वेलकम रुपेश गावकर। धन्यवाद।